Very well. So I would like to add some more pages here, but before we do so, let's build a navigation system here in the one file, and then we will replicate it to the other files. So rather than going this way, which is like creating just anchor tags and keeping them put together, we can have a slightly different approach. So let me just delete this entire thing and start with an unordered list. There are two kinds of list which you can create in HTML. One is unordered, another is ordered. And they are simply the bullet lists or the numbered lists. So unordered means bulleted list. Ordered means 1, 2, 3. And they are represented by either typing UL or OL. Inside the list, you have list items, and see how smart it has become. It automatically understood the purpose, and in fact it listed two items along with the href and the anchor tags pointing rightly at the pages we have created. So I just need to hit tab, and that's it, and we get this. Okay, so now we'll have to style it, and this time we are not styling the anchor tag separately, which we had done earlier, but rather we are pointing to the unordered list and list items. So here what we can do, instead of uh, hello Silpi, मैं middle of the demonstration हूँ अभी, आप please carry on करो ना meeting, ठीक है? Okay, so look at this UL and LI. I can address these by typing in UL, which is again a reserved class, and then we can further point at Li. So UL and Li, and I'll just copy this line of text from here, text decoration, and paste it here. Sorry. We have to represent these as block items. So we'll have to change the display from inline, or we can choose block. Sorry, inline in this case. Now this fixes things out. Perfect. So we have the exact same thing here, but the good part is this is all wrapped within this unordered list. You can also change this entire thing and input it within the nav item. The benefit of doing this is that since it's a reserved class, the SEO becomes better. The search engine optimization becomes much better because search engines can easily understand your navigation if you wrap this up inside nav items. Now, the way nav works is slightly different. So let's go to W3C schools and then look at nav HTML5, and we will learn about this tag. So if you have a nav tag, you don't have to worry about the UL or LI. Earlier, prior to HTML5, we did not have nav tag available to us. So we can simplify this thing simply by wrapping our anchors within the nav. Let's do that. So basically we are saving a lot of lines of codes and reducing complexity
by removing the list items and unordered list. And this will still work in the exact same way like earlier. You see, there is no change, right? In fact, if you remove this entire line of styling also, let me just cut it out, then you see it works, except the anchor tags are displayed in the default way. So let me paste it back and we can remove this UL and LI, and the anchor tags can be styled in any possible way you want. You want the font size to be bigger, you can do that, change the color, change the font family, use the text decoration or remove it completely. That's totally up to you. The text decoration simply removes the underline. Okay, I'll say Control Z to get it back. They come. So let me save this. Now this nav can simply be copied from here and added in the about us as well. So instead of this entire thing, we are simply going to wrap that up inside a nav tag. If I ever need to add another page in it, it's as simple as simply coming here, copying this line of code, enter, paste, enter, paste, and you will have those nav items available to you. So let me say we need another page called portfolio and one for contact. Okay, save this, and we made these changes in index. Why is it not? What happened is that we changed the link but we did not change the text here. So we have to type here also portfolio and here contact. Okay, nice. Well, let's style the nav because right now it's not looking nice. Okay, what I want is that it should be having some margin at the top, at the bottom, or maybe the whole thing could be placed, you know in the center. Let's do those things. So let's first address the body, or let's not mess the body up, but rather wrap this entire thing within a container. So I'm gonna first time introduce a div, which is like an empty box which can hold things inside. So I'm gonna start with a div, hit tab, cut this closing tag of the div, and wrap everything which is there on this page within this div element, and then assign this div a class called container and save this. Now I'm gonna go to the style and so it automatically understood what I intend to do with it. So I'm gonna simply say tab to accept it and then save, and let's see what changed. Right, this is what our intention was. Somehow, the AI engine is getting very smart and it gives us the result we need. Now notice, if I reduce the size of it, the image starts going outside the container. You know why this is happening? Because the image is not given the property of width in terms of percent value. But if you look at the container, the width is given as percent value. So this attribute width 80%
is calculating the entire width of the page and removing 10% from here and 10% from here. Why 10% from either of the side? Because margin is set to auto, and when margin is set to auto, then it automatically centers the page. Okay, I want it a little more narrower, so I'll go with 70%. And then this border radius and all those things, we'll deal with it later. uh, I don't want, I want the navigation to be on the top, or whichever way you want to style, that is totally up to you. We are not deliberating upon how it looks, but rather how it is structured. Okay, so now the challenge we have at hand now, that this is fine, but if I reduce the size of it, the image should not go out, or image should also resize basically along with the content. So how do we do that? We simply go to the image we have, the img tag, and where width is explicitly defined as 550 pixels. Rather than this, we can say, let's say that the image should always be 50% of the width of the container. Okay, because this is inside the container, I simply need to come here and say 50%. That's it. Instead of 550 pixels, I'm gonna say 50%. So it will calculate the width of the container and always ensure that the image is 50% of the width, even if it is reduced in size. Okay, hello. अनुश्री मैम बुला रही, एक बार चली जाओ। जा रही जा रही जा रही। Okay, so if I reduce the size now, notice that the image is reducing along with the image. Okay, now in this case, what happens if I keep on reducing it to the level? This is not good, right? Yeah, this is not good. So there is a property called minimum width which can be assigned to it. So width, and prior to that, if I assign min width, this is a CSS property, it cannot be assigned here, I guess. No, this will not be assigned here. I'll have to add a class to it, and I'll call it image, and then I can go for min width and define it 350 pixels. So what I just did is that if the image reduces, it will reduce but not below 350 pixels. Okay, so it can reduce but not below 350 pixels. If you increase, then see it acquires the 50% of the width, but if you reduce after 350 pixels, it will not reduce any further. Okay, so that's what we did. In the similar way, the margin can also be for the container, we can also have a property of min width, and we can set it to let's say after 500 pixels,
it doesn't reduce in size, because at this scale, this much of margin on the left and right looks fine. But at this scale, having the same amount of margin does not make much of a sense. If I remove this margin is not making sense. In fact, it's crunching down our whole layout. I don't want that. So I'm going to say Control V to paste the values back, and maybe just go a little higher than this and go for, no, I think 500 was good enough. By the way, this kind of responsiveness should not be hard coded. This is a hard coded responsiveness. Responsiveness should happen in relation to the media. That means the width of the screen and the device and the resolution. Okay. So if the same website is opened on a laptop, it will work in a different way compared to if it is opened on a phone. So for that, we use media query. Make a note of it and learn about that by googling it or by going to w3schools.com. Media query. Yes. So we learned about the navigation. Now why this is not behaving in the same way? Because we don't have the container class wrapping up here. So let me just add a div, cut the closing tag, paste it here, and add a container class to it, and we'll be good to go. If I click on About Us also gets the styling which is received by the index. Now you must be thinking, sir, what about these two? Now those two are not available here. So we must copy the entire nav from the index and paste it back here. And then it will be there. Okay. So another important thing which we should learn about HTML5 is the way the content is structured. So we have things placed in this order. We have a container, within the body tag, and the container can have sections within it, can have multiple sections. Okay. And some of the reserved sections are, for example, nav acts as a section and has a reserved space in HTML5. Similarly, we also have header, footer. Now these are reserved sections, and rest all could be defined as custom sections, and a class can be assigned to it. This is how the whole page is structured. We also know it as data object model. How data is entered as objects and a model is created out of it. So the section can further have more information. Those can be divs. It can have multiple div also. In fact, a div can have further divisions within it, the nested elements. So this is the structure we work with.
for creating the web pages. Okay, clear? Very good. So now let's go back to VS Code and then try to define sections. We already have a nav section here. So I'm gonna make another section, hit tab, and sections can have class inside. So this section acts as, or maybe let's make a header, and my header is going to have a nav. Sorry. Okay, there is a difference between head and header. Header stays outside the body and header stays inside the body, and header usually have a nav element and primary identity. So we can sort of create a div and then add an image, or a logo, something like that. So let's give it a class called logo. Is it listening to me यार? मैंने सिर्फ बोला logo, उसमें लिख क्या आ गया? It's not good. And it has, of course, my website logo goes here. I'm gonna save this, and before we move ahead, let's try to style it. So this is my first section, header here. Okay, and header has container header. Header has a nav element and a div element. That is what we have. I am showing you here because you would be able to visualize and memorize it better. This div element contains my logo. The header closes here, and then we have sections. So div and nav. This entire part is my header, which stays within the container within the body. Body starts here, container starts here, then comes header. Header has exactly the same structure like I showed. Let's examine what happened after I have restructured things here. By going to the home page, things look pretty much same, except that now I have my website logo showing up here. And if I expand the browser window, then again this is put in an order. I don't want it like this. I want this to show up on the left and this to show up on the right. Let's try doing that. So we need to style the header in a way that it treats its children's like objects which can be placed side to side. Okay, so we'll go to the style, and after the container, it's usually a good idea that you also put the style in the exact same order the elements are put in the HTML file. So header again is a reserved class. I don't have to define it here by inputting dot. Now here in the header, I want it to be displayed like flex box, or simply typing flex puts the header like this. So side by side. The children of the header, this is the first children, this is the second children. So the children of the flex box will be displayed side by side. And then there are other properties of the flex box which gives us better control of how things will be positioned. Okay, to learn about that, let's go to W3C schools and I'll show you the resource.
I just don't want to code it and then leave you in the limbo, but rather show you where to read about it. So if I go to CSS and go to Flexbox or Flex, scroll down, I have CSS Flexbox and Flex container and Flex items. So notice what Flexbox does. CSS Flexbox is short for CSS Flexible Box Layout Model. Flexbox is a layout model for arranging items horizontally or vertically within a container, which is exactly what we are trying to achieve in a flexible and responsive way. Flexbox makes it easy to design a flexible and responsive layout without using float or positioning, which is a nightmare actually, because you have to write a lot of line of codes and then again it's not as responsive as it can get with using Flexbox. You can see these items listed here. And Flexbox versus grid, there is another way how you can represent the items. You can study that as well, but we will just work along with this and try and understand how this works. A flex container with 3 flex items. The element below represents a flex container. The blue area is the flex container with 3 flex items. Similar is the situation in our case. We have, if you want, I can put background colors for better visualization. Let's do that so that you can understand it better. So the header is acting like a container. I can go to the style.css and header can be assigned a background color, a very tacky background color. I'm going to choose something which burns your eyes so that you can clearly see what we are working with. So this is the flex box within which we have two contain flex items. Okay, the children are considered to be flex items. Exactly similar structure we have also. We have a flex class, this class container, and the container is display flex. Background color is set to dodger blue, and this display flex is actually making these items align side by side. Otherwise, these items are block elements and are supposed to be stacked on top of each other, not shown side by side. Then comes this class container and div. So here they are targeting the divs inside and then styling it. So giving it a background color of light gray, margin of 10 pixel, margin of 10 pixel from all sides, padding of 20 pixel from all sides, and font size of 30 pixels. That is what it is doing. Okay. Now, if you move ahead and learn more about the flex containers, you will see that things can be arranged in rows, columns, row reverse, and column reverse. Also, things can be arranged in this fashion. You can send things to the right, arranged exactly in opposite. Then comes flex wrap property. You just have to read through it and then try out all these options. You don't have to mug things up basically. I also don't remember everything, but whenever I require it, I can always go and take reference, right? And thankfully nowadays I don't have to recall these things. Nobody has to recall these things. You just have to use AI for doing these things. But before AI, we had to do all the coding manually. Hmm. So I am looking for something like this, right? Something like this, where the items could be justified across the container so that the logo could be sent to the left hand side and the navigation could be pushed to the right hand side. That is what we are looking for. So here I have exactly the property I'm looking for. Justify content space between. You can simply copy this, come here and here, write this, save this, and it worked. So it's pushing the logo on the left hand side, pushing the content on the right hand side. Do not get worried. Why is it sticking to the top? Why is it not coming in the center? All those things can be addressed, not an issue. Okay. So the vertical alignment actually is very challenging task in HTML. Okay. So it can be either controlled by adding some margin to this,
Let's see um, the nav. Where is nav? We haven't styled nav yet. So below header, let's call nav and add a margin of, in fact, margin top of about 30 pixels. And see, as I add the margin, it pushes the content below, right? But is it the correct way of doing it? No, absolutely not. I'm just doing it here. Do not do it in your final production website. But this is one easy way of controlling it, right? And it stays true. Even for the responsive part, it stays true, not a problem. But not, this should not be the practice. Let me get rid of this horrible background color we had given, and now our navigation looks nice. Okay, but here it again breaks. So all we have to do is implement the same things here as well, right? So we just have to copy this entire header, Control C, go to the about and replace this entire nav with the newly created header of ours. And this is the benefit of creating sections. You can simply copy the entire section and paste it wherever you want. Let me save this, and we have a beautiful about us page and home page. Okay, got it? Easy? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ये, थोड़ा डिफिकल्ट है, करके पता चलेगा. देखो ये जो पेन है ना, go through this pain, because when the AI coding will start, this pain will give you an advantage over somebody who is just using AI coding and who has suffered through this entire system. If you have paid attention to this, your work will be very different than somebody else just using AI vibe coding. Create a home page for me, and the home page comes, and then there are these small things you need to change, and then you spend entire day saying, move it to the left, move it to the right, give it this color, give it. No, you go to the code and then do it yourself. Yeah, it doesn't take much time, right? Okay, now rather than using one image, I wish to use three images here. Okay, and I also would like to probably style the logo in a different way, uh, and let's first put three images there. Okay, how should I approach it? You guys guide me, because I wish to create a section, right? As per the things I taught you here, I should be creating a section, right? I am done with the header, and I need to display three images. I see that there is this image class lying here. I need a section, a nice section which can have three images side by side, and probably below that image written something, a heading, some text. That is what I need. Maybe something like this, something like this. How do we do that? So I want to create a section. That's clear. So I'm gonna type in section, and I want inside some images, correct? So one image is already there. I'm gonna cut it and paste it here, right? So I'll paste it once again, paste it once again, and this section can be given a class, and we can call this class image uh, section, or you should give a more specific name. Actually, I'm just using a random name came to my mind, image section. Now if I save it and go back, I should see very strange things happening. All the images are stacked on top of each other, and all of them are 50% of the width of the container, right?
So first thing is, I don't want this 50% to be explicitly mentioned because it's using this entire section which is already spread across, and you can learn about that by going to the style and calling that class here image section and giving it a background color. Now this is something which I do a lot. If I don't, if I'm not able to see what is what, give a tacky background color so that it's hard to miss. So this is what we are operating within. This is the section we have. Okay, so let's try to fix things up. I don't want to just put images here. I can put divs instead. Okay, or let's just take the width property, remove that property from here. Okay, let's see what happens if I remove the width property. Horrible, right? Okay, fine, no problem. Separately defining width for all three of the images, huh? Hmm, not a good idea. I should be able to control the width of the images at one place, right? How should I do it? I'll go to the style, and before I try that, let me try another thing. Can I display it as a flex, and which fixes all the things automatically for me? Just one single line of code, right? But now another problem happens. They are stuck with each other, right? I need some gap in between. How do I do that? Let's go back to the code. And in this case, I have some choices. It's not a good idea, so I'll not even show you that. I need to first go to the image section, and then somehow this is strange, yeah. AI knows what I'm about to do. It exactly knows that I want to add some margin. The value is wrong though, but and some border radius to the images inside the image section. So img tag addresses all the images inside dot image section class. Okay, so dot image section class space img tag, that means all the img tags inside image section class will follow the rule which is about to be set. So I'm simply gonna hit tab. Let's accept whatever it gives us. Oh, right, what is happening? ज्यादा खुश हो गया मैं, देखो इसको बुरा लग गया लगता है, ये कंप्लीट नहीं कर रहा है। इमेज सेक्शन, हाँ अब हो गया। ठीक, देखो इसने क्या किया, सबके ऊपर ब्लैक बॉर्डर लगा दिया, लेकिन मेरे पास ना अभी भी मार्जिन नहीं है। हाँ, मैं इसको फिक्स करने के, अच्छा ये मार्जिन बॉर्डर है, सब कुछ ठीक है, बट ब्लैक बॉर्डर थोड़ा ना अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा ग्रे कलर का चाहिए, ग्रे भी नहीं वाइट चाहिए। चलो ये हो गया। बॉर्डर रेडियस 15 ठीक है, 5 पिक्सल इज टू थिक, सो आई विल गो फॉर 3 पिक्सल्स, एंड आई एम गोना ऐड margin left 10 pixel and margin right 10 pixel. The same thing can be written in a different way, just margin 0 10 0 10. That is exactly the same.
So after applying this margin, we should have a gap of 20 pixels here, 20 pixels here, and 10 pixels here. And this 10 pixel is already coming from the padding applied on the body. Okay. Now I can get rid of this background color, the tomato color, and things look the way we want it. ठीक है, साइड बाय साइड. अच्छा, ये देखो, ये समस्या है ना? ये तो नहीं चाहिए था हमको, ऐसे तो नहीं चाहिए था भाई. ये तो इमेज एक साथ ऐसे है, ऐसे नहीं चाहिए था. So, ऐसे प्रोबेबली हो रहा है ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड की वजह से. मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, फिर देखता हूँ. नहीं तो कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे. हाँ, अभी भी हो रहा है. इसका मतलब है कि डिस्प्ले तो ठीक है फ्लेक्स, लेकिन फ्लेक्स रैप नहीं हो रहा. तो देखते हैं फ्लेक्स रैप. नो रैप बाय डिफॉल्ट है, रैप लगा देते हैं. तो अब जो है इमेज रैप होने लगेगा. लेकिन इमेज रैप हो रहा है तो हम साइड बाय साइड की प्रॉपर्टी लूज कर रहे हैं. सो इस केस में इसको फिक्स करने के लिए हमें इन सारे इमेजेस को डिव्स के अंदर रैप करना पड़ेगा. ठीक है, पर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे. हम इन प्रॉपर्टीज को और ध्यान से समझेंगे कि कैसे. कहीं पे दिख रहा है तुम्हें जहां पे डबल रो में दिख रहा होगा कंटेंट, यहां दिख रहा है. ट्राई योरसेल्फ कर लेते हैं. और यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये ऑटोमेटिकली अलग अलग रो में आ जा रहा है. तो हमें पढ़ना चाहिए भाई. अब इसमें डिस्प्ले तो फ्लेक्स है, फ्लेक्स रैप, रैप रिवर्स है. अगर रैप रिवर्स मान लो हटा देते हैं हम और रन करते हैं तो ये स्क्वीज हो जा रहा है. मतलब रैप ही वो प्रॉपर्टी है. अगर मैं इसको रैप कर दूं यहाँ पे और फिर रन करूं, तो इसका मतलब रैप ही वो प्रॉपर्टी है जो उसको रैप कर रही है. तो फिर हमारे केस में क्यों वर्क नहीं कर रहा ये? मैंने भी तो डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लेक्स रैप किया था. एक बार फिर से चेक करते हैं, मे बी हमने कोई कॉमा फुल स्टॉप छोड़ दिया होगा. डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, और हम रैप चूज करते हैं और सेव करते हैं और फिर देखते हैं. अच्छा, इमेज का मिन विड्थ जो है वो 350 पिक्सल है. ये तो नहीं परेशान कर रहा कहीं? एक बार चेक कर लेते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी को हटा के देख लेंगे. अच्छा, एक सेकंड ना, ये मुझे ना इमेज के साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा. अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अब जो है हम इमेज के साइज को यहां से चेंज कर सकते हैं. सो अब विड्थ में जाऊंगा और लेट्स गो फॉर 300 पिक्सल्स. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. जो मुझे चाहिए था वो हो रहा है. ठीक है. हम्म. अच्छा, अब बोलोगे सर ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा. तो ये 300 जो पिक्सल है ना, इसको आप एक और अच्छा काम कर सकते हो कि 33.3% पे डाल सकते हो. तो ये बिल्कुल इवन. अच्छा, 33.6, ओके ओके. इसमें एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, जिसको बॉर्डर बॉक्स करना पड़ेगा. फिर भी नहीं हो रहा तो 33% कर दो. ये 0.3 प्रॉब्लम कर रहा होगा. ये 30% ही कर दो चलो. लुक्स नाइस. अब अगर मैं इसको रैप करता हूँ तो ये रैप भी होता है.
ठीक है, और इसको हम मिन विड्थ प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं ताकि कम से कम ये 250 पिक्सल्स का तो रहे। परफेक्ट। और जब ये रिसाइज हो रहा है तो यहाँ पे मार्जिन जो है हमने लेफ्ट राइट यूज किया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मार्जिन 10 पिक्सल देंगे तो वो जब ऊपर नीचे आएगा, सॉरी सेमीकोलन भूल गया, तो वो बहुत प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। देखो ठीक है। सो हमने प्लान तो ये किया था कि हम रेस्पॉन्सिवनेस पे कल ध्यान देंगे, बट एक इनिशिएशन हमारा हो चुका है। सो आपको दो प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़नी है। अभी सिर्फ फ्लेक्स फ्लेक्स पढ़ो, है ना, ग्रिड्स कल पढ़ाऊंगा। ग्रिड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर फ्लेक्स समझ में आ गया तो ग्रिड्स भी समझ में आ जाएंगे। अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया है ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करा। I am not expecting that you are going to be master of handling flex boxes in next half an hour. But at least what I showed you, you should be able to do it. The only changes I have done is here. Now I have this section. The amazing part is, I can simply copy this line of code, go to the about us page and include it here. And it will be there, behaving exactly how it is behaving in the index file. That's the beauty. ठीक है? ये तुम्हारे से बन जाना चाहिए। ये भी फ्लेक्स बॉक्स की वजह से है और ये जो है ये भी फ्लेक्स बॉक्स की वजह से है। सो यू शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट दीज टू थिंग्स। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो एक क्विक क्वेश्चन, ये जो एंड तक एक्सटेंड हो रहा है मेरा H1, ठीक है, मैं इसको रैप करना चाहता हूं जहां तक मेरा टेक्स्ट है। क्या करना चाहिए मुझे? क्या, कहां पे? इनलाइन ब्लॉक या जस्ट ब्लॉक? सोच के बताओ। मुझे इनको इनलाइन नहीं लेना है, मुझे सिर्फ इस एलिमेंट को ब्लॉक करना है। ये एक्चुअली में ऑलरेडी ब्लॉक है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है ना। क्या करें फिर? इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। चलो करके देखते इनलाइन ब्लॉक। तो हमें H1 टारगेट करने सारे के सारे, और H1 के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हाँ, इनलाइन फ्लेक्स पे हो जाएगा, पता नहीं, देखते हैं ट्राई करके। चलो हो गया ना, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। सो यस, इनलाइन फ्लेक्स से हो जाएगा। अभी फ्लेक्स पढ़ाया तो ऑफ कोर्स वही क्लू था, तो क्लू सही पकड़ा तुम लोगों ने, जिसने भी पकड़ा। ठीक है। सो दिस इज बिकॉज अगर हम इनलाइन ब्लॉक करते तो ये वाला एलिमेंट इसके ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि उसको स्पेस मिल गया था। अगर इनलाइन फ्लेक्स किया तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो हर चिल्ड्रन को ब्लॉक की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे इनलाइन फ्लेक्स करा, इसका मतलब है दीज आर नाउ ट्रीटेड एज फ्लेक्स एलिमेंट्स which are inline, so automatically it will clear right or clear left depending on how it is aligned. So my web page is looking nice, है ना। एक लास्ट चीज, क्विक क्वेश्चन, if I need to take out this navigation away from the container, will it be possible? I want this navigation to go above the gray box, is it possible? कैसे कर सकते हैं? कोड में चले, इंडेक्स में जाएंगे, क्या उठाना है मुझे? ये पूरा हेडर सेक्शन उठाना है ना। उसकी जगह पे मैं सिर्फ ये नहीं कट कर लूं यहाँ से और यहाँ पेस्ट ना कर दूं।
ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, भाग गया दोनों, ये तो गड़बड़ हो गई, क्या करें फिर। देखो इसको ठीक करने का तरीका बताता हूँ। अब जब ये एक कंटेनर है तो मुझे सेम कंटेनर यहाँ पे भी चाहिए, और यहाँ पे एक डिव क्लोज कर देंगे हम। तो मेरे को दो पीस मिल गए। अब अगर दो पीस मिल गए तो ये जो कंटेनर क्लास है इसके सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर हम दे देते हैं, लेकिन इस क्लास के साथ तुम्हें याद होगा कि हम आईडी भी असाइन कर सकते हैं, और इसको अगर हम आईडी हेडर सेक्शन दे देते हैं और फिर जाके स्टाइल सीएसएस में जहां पे हमने कंटेनर को स्टाइल किया है उसके नीचे, क्योंकि ये आईडी है, आईडी स्टार्ट्स विद अ पाउंड साइन, एंड यहाँ पे हम हेडर सेक्शन डाल के, अब इसका बैकग्राउंड जो है अगर मैं चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे ग्रे नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर, और मैं व्हाइट भी चूज कर सकता हूं, और मुझे सिंपली हटाना है तो मैं उसको नन कर दूंगा। बट नन वर्क कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, बैकग्राउंड कलर एक मिनट में कुछ, हाँ व्हाइट तो काम कर रहा है, तो नन काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, एंड आई डोंट वांट एनी बॉर्डर अराउंड इट, so I'm gonna go border and I'll call it none and done। ठीक है, तो अब तुम्हें लग रहा है कि कुछ समझ में आया, कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं बस, ये तुम्हारे सामने है, एंड स्टार्ट शेपिंग आउट। You know the good part is you don't have to make a very fancy website, but if you know exactly what to do, where to do it, you have that control that gives you a different power, है ना। दिस इज नॉट सिमिलर टू क्रिएटिंग इट इन इलस्ट्रेटर। अभी इलस्ट्रेटर पे बैठेगा, फिग्मा पे बैठ के फट 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 खत्म, अलाइन कर दो, इसको लेके खींच के थोड़ा सा इधर कर दिया, बस हो गया, ओ हम तो डिजाइनर हो गए। बट यही पावर जब तुम्हारे पास कोड से आ जाए तो तुम्हें अलग मजा आएगा। ठीक है, प्लीज ट्राई दिस आउट एंड गेट इट डन। आई एम गोना डू द सेम थिंग। ये जो मेरा अरेंजमेंट है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ तक कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, गो टू द अबाउट अस, यहां से लेके यहां तक पेस्ट कर दूंगा, एंड माय अबाउट अस पेज विल आल्सो हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट विल रिक्वायर यू टू पुट सम इनपुट फील्ड्स, टुमारो विल डू दैट। ठीक है, ग्रिड्स समझेंगे, ग्रिड्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द पोर्टफोलियो पेज, एंड फॉर्म इनपुट फील्ड्स जो है वो कॉन्टैक्ट में डालेंगे। और यहाँ पे अभी तक हमने सब कुछ सीखा, लेकिन हमने बटन्स नहीं बनाए। हाइपर लिंकिंग आपको सिखा दी मैंने, लेकिन मैंने बटन्स नहीं बनाया। सो ट्राई पॉपुलेटिंग दिस विद मोर कंटेंट, एंड देन कर लेंगे फिर, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। थोड़ा कंटेंट डाल के कंटेंट को, अब जैसे मान लो मुझे कंटेंट डाल दिया मैंने, अब उसको मेरे को ना कॉलम्स में ब्रेक कर सीखना है ये चीज में। अगर मैंने यहाँ पे लोरेम इप्सम डाल दिया, मान लो इसके अंदर ना पूरा भर गया ऐसे टेक्स्ट यहाँ तक, मुझे कॉलम में ब्रेक कर, तो मैं जाके गूगल पे सर्च कर सकता हूँ कि क्या करूँ कॉलम में ब्रेक करने के लिए। कोई एक ही कमांड होगा, छोटा सा कमांड होगा, I'll be able to break that into columns. So when you start learning things on your own, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सिखाया है। देखो मान लो मैंने ये कंटेंट उठा लिया यहाँ से, एंड लेट्स गो टू VS कोड, एंड अबाउट पेज में ये जो अबाउट अस पैराग्राफ है, मैं इसको लोअर इप्सम डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं। अब मुझे इसको अगर दो कॉलम में ब्रेक करना है, मुझे सच में नहीं पता है,
कि कैसे इसको करेंगे। तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊं, मैं कहीं भी ऐसे गूगल पे भी जाके बोलूंगा ना कि p tag in 2 columns html। अब देखो, जब भी तुम टाइप करोगे ना कुछ, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लिंक जो होगा वो W3C स्कूल का होगा। अब या तो तुम यहाँ पे पढ़ के सीख लो, या यहाँ पे एक बार क्लिक कर लो। अब ये जो है किस चीज से बता रहा है तुम्हें, 2 कॉलम लेआउट यूजिंग CSS ग्रिड बता रहा है, करेक्ट। पर हमें वैसे तो करना नहीं है। To place p tag in 2 columns using HTML and CSS, the best method modern flexbox grid या CSS मल्टी कॉलम लेआउट, मुझे ये चाहिए। कॉलम काउंट 2 ये एक प्रॉपर्टी है, और कॉलम गैप और ये है। मैं कॉपी कर लेता हूं, ये CSS की प्रॉपर्टी है जो इसको ठीक कर सकती है। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करें, अब जितने पैराग्राफ्स हैं उस पर तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इस पैराग्राफ में एक क्लास डालते हैं और उसका नाम रखते हैं अबाउट टेक्स्ट, बिकॉज दिस इज एक्चुअली होल्डिंग अबाउट टेक्स्ट। विल गो टू द style.css and call that newly created class here about text। और इसने बहुत खूबसूरती से काफी चीजें डाल दी मेरे लिए, पर मुझे अच्छा भी लग रहा है देखने के बाद, रहने देते हैं। लाइन हाइट वगैरह सब डाल दिया उसने। और इसके नीचे ना मुझे वो प्रॉपर्टी डालनी है, कॉलम काउंट 2 कॉलम गैप। जब तुम ये करने लगोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, दैट इज ट्रू लर्निंग, एंड आई एम 100% श्योर यू आर ऑल केपेबल ऑफ डूइंग दैट। दिस इज ट्रू लर्निंग, ठीक है। ये नहीं कि जो ना मैंने बताया वो तुमने भी कर लिया, टेक इट अप अ नॉच, ठीक है। नाउ लेट्स से आई वांट टू हाईलाइट सर्टेन टेक्स्ट, दिस पार्ट आई वांट टू हाईलाइट। In fact, I want to create a rule in my CSS that whenever I need to highlight anything, it can uniformly highlight it across my website, ठीक है। सो हम क्या करेंगे ना, हम एक बहुत खूबसूरत फीचर होता है स्पैन, ठीक है। ये भी रिजर्व क्लास है, और स्पैन में मैंने कलर ब्राउन अपने आप ले लिया इसमें, ठीक है। स्पैन का कलर ब्राउन है। अब मैं जहां पे भी मेरा टेक्स्ट है, मान लो मुझे इस टेक्स्ट को जैसे ही मैंने स्पैन के अंदर डाला, ये जो क्लोजिंग टैग है स्पैन का, इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ, और इसको मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी मुझे करना है ब्राउन। दोनों क्लोजिंग टैग हो गए ना, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ जाऊंगा, देखो वो दोनों ब्राउन दिखेंगे मुझे। व्हाट अ कोइंसिडेंट, दोनों एक ही लाइन में था। खराब लग रहा है, हटाना पड़ेगा। यहाँ डाल देते हैं, ये देखो, ठीक है। अच्छा, गुड पार्ट, मान लो मेरे वेबसाइट में 50 जगहों पे मैंने ऐसे यूज करा। अब लोग बोल रहे भाई जो स्पैन तुमने किया है ना ब्राउन तो बढ़िया लग रहा है, उसको ना बोल्ड भी कर दे। तो हमें 50 जगह भागने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आना है एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट वेट नहीं, गलत प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट होगा। और फॉन्ट वेट में हम चूज कर सकते हैं कि वो कितना थिक होगा, ठीक है। 600 इज फाइन, ठीक दिख रहा है। मैं इसको जैसे चाहूं वैसे हाईलाइट कर सकता हूं। मान लो इसमें मुझे बॉर्डर देना है तो मैं बॉर्डर दे सकता हूँ,
पैडिंग दे सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ, 2 पिक्सल का दे सकता हूँ across the website anywhere I want. Okay, I hope you have understood how powerful the CSS and HTML can be when it comes to creating web pages. I don't expect you to be able to follow exactly and do things which I have done, but more or less you should get the concept of flex boxes, right? And be able to achieve at least these 2 pages. Okay, okay, that's it for the day from my side.